नमस्कार साथियों, ये देखिए किस तरीके से बर्फ़बारी हो रही है कनाडा में। और इसका आनंद लेने के लिए हम घर से निकल चुके हैं और आपको भी सफ़र का आनंद दिलाते हैं। गाड़ियों के टायर फिसल रहे हैं क्योंकि बर्फ़ जो रोडों में पड़ी हुई है वो काफ़ी फिसलन पैदा कर रही है। इधर देखिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। Sometimes people go home early when there's a storm like this. Yes. Especially if they're out of town. And people like me will work from home. Must be an email. गाड़ी फिसल रही है ऐसे में। See, and the difference here is there's actually the buildings protect from the wind a bit. Eh? Yes. And these are all eastern winds. Yeah. This one's coming up from the United States, this storm. Okay. That's why I think it is touching mainly the southern parts. What's that? It's mainly touching the southern Saskatchewan. Yes. It's not even in Saskatoon. No. So you get out on the prairies. Yes. And you leave your car and walk. And you're not dressed quite right. This will kill you. Oh. My God. Especially at night when the temperature starts dropping, eh? Mm-hmm. Now we're a bit better. Traffic is flowing a little bit better. Yeah.
ऐसा तूफान तो मैंने ठंड में भी नहीं देखा है जैसा आज आ रखा है। इतनी मोटी मोटी बर्फ़ गिर रही है और साथ में हवा भी बहुत तेज़ है। ये सब बर्फ़ पिघल चुकी थी। ये देखिए अब कितना ढेर लग गया है सुबह से। ये आज की बर्फ़ है, सिर्फ आज की। कम से कम नहीं तो 1-1 फीट बर्फ़ गिर गई है आज भर में। Oh, it won't take us long from here. अब हम ऑलमोस्ट यहाँ से शहर के बाहर निकलने वाले हैं। रिंग रोड आ रहा है। Shit, I'm going through it. चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी, बर्फ़ ही बर्फ़। विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। See, the road is icy too. Yeah. You think this wind can throw us off the road? What's that? You think this kind of a wind can throw us off the road? No. Worse than this? You've driven in worse than this? Yeah, at night. Oh. Most people have in this province, eh?
flashing lights on. Or as they call it here, a boneyard. These are all junk? Old cars. Okay. You get parts off of them. That's an acreage by a guy that owns a big equipment manufacturing place in Regina. He's worth millions. Oh. That one? Yeah, that's all it is. There's so many birds who are migrating back. Yeah. I can see thousands of birds in the evenings coming back. अब हम आ गए हैं एक मित्र से मिलने के लिए। Come on. Yeah. Hey, hi. How are you? Say hello. No, I'm your friend. Come. Shall we go? Come here. Sit down. Go sit down. Go sit down. You also come in. Hey, hi, Bill. Anymore? No. But I got a pop. I got a water. Are you going to have one or? Yeah. 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 Or Okay, beer. well, we don't want ginger ale, actually. So now what would you? Beer. Well, I'll change mine to a beer. Sunil likes his beer. Good. So, what are you working on these days? That's a different truck, isn't it? Yeah, I got that truck for nothing. Hey? I got that truck for nothing. The motor was blown on it. Yeah. I got the motor rebuilt, and in the process now of putting a big fuel tank on it. I bought. ऐसा सिर्फ पिक्चरों में देखते थे, अब हकीकत में देख रहे हैं। ये मेरे दोस्त बिल हैं, उनका फार्म यार्ड है और उनके सारी मशीनरी है, इक्विपमेंट है और वो बहुत बड़ी फार्मिंग करते हैं। ये देखिए ऊपर पूरे बर्फ़ में स्लाइड करने वाली मशीनें हैं और यहीं पे ही इनका अपना गराज है। कोई भी मशीन ख़राब हो जाए तुरंत उसको रिपेयर कर लो। तो दोस्तों करते हैं बाय बाय और अब मैं बात करने वाला हूँ विल से। बाय बाय।